Welcome to Jannat Learning Digital Class. Today lesson MTH 302 Business Mathematics and Statistics. Lecture 38 Pattern of Probability, Binomial Poisson and Normal Distribution of Virtual University of Pakistan. A negative binomial distribution describes the number of failures encountered before achieving a specific number of successes in a sequence of independent Bernoulli trials. Examples include flipping a coin until getting 3 heads. How many times do you need to flip a coin until you get 3 heads? Where each flip is a trial and getting heads is considered a success. Rolling a dice until getting 2 sixes. How many times do you need to roll a dice until you get 2 sixes, with each roll being a trial and getting a 6 as a success? The key difference is that in a binomial distribution, the number of trials is fixed, while in a negative binomial distribution, the number of successes is fixed, meaning you count how many trials are needed to achieve a certain number of successes. Essentially, the negative binomial is considered the inverse of the binomial distribution. दो नामी तकसीम और मनफी दो नामी तकसीम के दरमियान अहम फ़र्क यह है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रायल्स की तादाद तय होती है, जबकि मनफी दो नामी तकसीम में कामयाबियों की तादाद तय होती है. We shall roll the dice again for the second trial. If 2 does not appear in the first trial, then the probability of rolling the dice will be 5/6. Based on the outcome, the second trial will be multiplied by 5/6. That is, if the second trial is successful, and we get 2, then the probability of the second trial will be 1/6. Then total probability will 5/6 multiplied by 1/6 equal to 5/36. But if the second trial is not successful and we did not get 2, then the probability of the second trial will be 5/6. Then total probability will 5/6 multiplied by 5/6 equal to 25/36, and in this way we have to keep trying until we get success. This calculation made by geometric distribution. हम दूसरे ट्रायल के लिए डाइस रोल करेंगे. क्योंकि 2 पहले ट्रायल में ज़ाहिर नहीं हुआ था, इसलिए डाइस को रोल करने का इम्कान पहले ट्रायल में 5/6 था. इसे दूसरे ट्रायल के नताइज से ज़र्ब दिया जाएगा. यानी अगर दूसरा ट्रायल कामयाब होता है और हमें 2 मिलते हैं, तो दूसरे ट्रायल का इम्कान 1/6 होगा, तो कल इम्कान 5/6 को 1/6 से ज़र्ब 5/36 के बराबर होगा. लेकिन अगर दूसरा ट्रायल नाकाम होता है और हमें 2 नहीं मिलता है, तो दूसरे ट्रायल का इम्कान भी 5/6 होगा, तो कल इम्कान 5/6 को 5/6 से ज़र्ब 25/36 के बराबर होगा. और इस तरह हमें इस वक्त तक कोशिश करते रहना है जब तक कि हमें कामयाबी ना मिले. ये हिसाब हिंसी तकसीम के फार्मूले से किया जाएगा. A factory inspector checks items on a production line until they find 3 defective items, where each item checked is a trial and finding a defect is a success. Negative binomial distribution describes a sequence of trials, each of which can have 2 outcomes, success or failure. We continue the trials indefinitely until we get our successes. The prototypical example is flipping a coin until we get our heads. Unlike the binomial distribution, we don't know the number of trials in advance. The geometric distribution is the case r equals 1. The negative binomial distribution can be defined in terms of the random variable x equals number of failures in independent Bernoulli trials, with probability of success, p, before the rth success. The probability mass function for x is: You draw cards from a deck, with replacement, until you get 4 aces. What is the chance that you will draw exactly 20 times? 10% of applicants for a job possess the right skills. A company has 3 positions to fill, and they interview applicants one at a time until they will all 3 positions. A. What is the probability that they will interview exactly 10 applicants? B. What is the probability that they will interview at least 10 applicants? जन्नत लर्निंग डिजिटल क्लास में शिरकत का शुक्रिया. हमारा मिशन आपको तालीमी कामयाबी में मदद करना, आपके तालीमी सफ़र को हमवार और खुशगवार बनाना और आज के लिए जामे हल, मददगार वसाइल
और माहिराना रहनुमाई फराहम करना है। हमारे कंटेंट में स्टडी की तजावीज़, इम्तिहान की तैयारी, इसकी हिकमत अमली, कोर्स के जायज़ा और बहुत कुछ शामिल है। सीखने वालों की हौसला अफजाई के लिए हमारी कम्युनिटी में शामिल हूँ। आइए मिलकर तालीमी जिद्दत की दुनिया को फतेह करें। बाकायदा अपडेट्स और कीमती इंसाइट के लिए जन्नत लर्निंग को सब्सक्राइब करें।